ये जो है तो अलमारी रिपेयर हो रही है। इसके दरवाजे टूटे हुए हैं और ये लग नहीं रहे दरवाजे। हम इसको जो टेढ़ा बिंगा है इधर से जो उसको सीधा कर रहे हैं, टेढ़ा जो है तो ये टूटा हुआ है, इसको वेल्डिंग मारना है हमको। ये इसको रिपेयर किया है हमने, ये लग नहीं रहा था, खोल के पूरा रिपेयर किया है। तो हम कलर भी करेंगे, रिपेयरिंग करके, रिपेयरिंग होने के बाद में कलर करेंगे। ये इसके ड्रॉ है, ये दरवाजे हैं, डोर। इसको हमको लंबी करके पेपर मारना है, पेपर मार के फिनिशिंग करके फिर कलर करना है अंदर बाहर से। ये हमने सीधा किया है इधर का साइड और इधर का भी। ये बहुत अंदर दबा हुआ था, इसको बाद में लंबी लगा के कवर करना है। ये देख सकते हैं गाइस, ये हमने इसको कितना पेपर मारा है, पूरा जंग निकाल दिया है इसका। ख़राब हो चुकी थी बहुत। ये नीचे भी देख सकते हैं आप, इतना जंग निकला है इसका। ये पूरा घसना हो चुका है हमारा, ये सब घस दिया है हमने। ये देख सकते हैं गाइस, कितना मलमा निकला है नीचे उसका। ये हमने वेल्डिंग मार दी है गाइस, अब हम इसको घसेंगे, फिनिशिंग करेंगे। जिधर जो टूटा हुआ था जिधर, उधर हमने वेल्डिंग कर दी है। अब हम इसको घस के लेंगे ग्राइंडर से, फिनिशिंग कर देंगे। उसके बाद इसको लांबी लगाएंगे। लांबी के 2 हाथ आएंगे हमारे, 2 हाथ लांबी मारेंगे हम इसको। ये हमारी लांबी लगाना चालू है। ये हम इसको पूरी की पूरी लांबी लगा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी लांबी लगा के टचअप नहीं तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा हमारा। ये हमको पूरी लांबी लगाना है इसको। डबल आता आएगा लांबी का। ये हमारा एक कोट लांबी लगाना हो चुका है। दूसरा कोट बाद में मारेंगे सूखने के बाद।
नहीं नहीं लांबी अच्छा क्या ये देख सकते हैं गाइस, हमने इसको लांबी करके एक हाथ मार के, लांबी का एक हाथ मार के उसको हमने फिनिश कर दिया है, पेपर मार दिया है, धो लिया है। अब ये इसको धोने के बाद और एक हाथ मारेंगे हम लांबी का। कलरिंग करना चालू हो रही है हमारी, हम इसको कलर करेंगे अब।
एक हाथ हो चुका है सिंगल कोट। अब हम इसको बाद में डबल कोट करेंगे। इस सूखने के बाद डोर लगा के डबल हाथ कर देंगे। ये कंप्लीट हो चुकी है गाइस कलरिंग। हमने रिपेयरिंग और कलरिंग किया है इसको भी। वही कलर पसंद किया है ग्राहक ने जो हमने पहले कलर किया था। तो गाइस ये फाइनली पूरी फाइनल हो चुकी है अलमारी। रिपेयरिंग और कलर पूरा हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। हमने इसको रिपेयरिंग भी किया है और कलर भी किया है।
इसका ग्लास कैसा था आप पहले वो भी देख सकते हैं, हमने कैसा साफ़ किया है इसको। ये हमने पूरा कंप्लीट किया है, इसको फाइनल हो चुकी है ये।